and welcome to the evening. Just wait for a few seconds. I got two feedbacks, and according to this feedback, they are compatible with adsorption and colloids. So let's move with colloids. Okay, so let's move to this chapter called adsorption and colloids. Which words used here in this chapter for the heading are totally different. What is adsorption and what is colloids? These are completely new words, maybe for you, and which may be surprised with what we may be curious about what is the meaning of adsorption and what is the meaning of colloids, and what actually we have to discuss here in this chapter. Though the words are different, the content of the topic, the concepts here in this chapter are very easy and are related with our daily routine life. Number of things what we use in our daily routine life are related with this adsorption and colloids. And many concepts what we are going to discuss here in the chapter are related with our daily routine life. Simply, there may be a bit difficulty without this concepts in adsorption and colloids. Okay. So adsorption and colloids, these are two different words. These are two different concepts, but they are interrelated with each other. And that's why the name is given adsorption and colloids. Once again, adsorption is a different word, is a different concept. Colloids is a different word and a different concept, but they are interrelated with each other. They goes hand in hand. And that's why the heading is given such like that, adsorption and colloids. We are very familiar with absorption. We are very familiar with absorption, but not with this adsorption. See the difference. We know what is adsorption. We don't know. And we know the absorption. The difference is of this B and here is the B. But the rest, the spelling of this is very simple. Yes, Prashant, bolo. I got the SMS that someone has raised the hand. So if is there anything you want to convey, you want to tell me, please let me know. Okay. Prashant, okay. Okay. Let's move to this adsorption and colloids one second. Okay. So, as I stated, these words are different, concepts are different, but they are interrelated, and we have to discuss the meaning of these words and concepts. Actually, this is a new word, that is adsorption, but we are very familiar with this absorption. दोनों में देखते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है और उसके सारी चीजों में डिफरेंस है, बट यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट डिफरेंस ऑफ यूज ऑफ बी एंड डिफरेंस यूज ऑफ बी. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस हियर कि what is this adsorption and what is this absorption. So being we are very familiar with the absorption, first let it recall or revise this absorption. There are many examples in our daily routine life जहाँ पे हम लोग absorption के साथ related होते हैं, concern होते हैं, उसी के साथ हम लोग deal करते हैं. Evening के time में mostly
काफी सारे घर में और काफी सारे बच्चे टी और बिस्किट्स लेते हैं, है ना, तो या फिर मिल्क एंड बिस्किट्स भी कुछ लोग लेते हैं। सो जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बिस्किट हम लोग चाय के अंदर डुबो देंगे तो चाय बिस्किट्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है, बिस्किट एब्जॉर्ब्स टी। सो इट्स अ एग्जांपल इन आवर डेली लाइफ। कभी कभी हमारा बिस्किट ज्यादा चाय एब्जॉर्ब करके ब्रेक डाउन होता है ना, and it's fall down into the cup of tea, so it's difficult to drink that tea again, but tea absorbs into the biscuit. This is the example. Scientific example के अंदर चलते हैं हम लोग हमारे बुकिश लैंग्वेज में। sponge put into the water, sponge absorbs the water, है ना, कई सारे। या फिर हम लोग क्लोथ्स की बात करते हैं, खास करके कॉटन के क्लोथ्स होते हैं, तो कॉटन के क्लोथ्स एब्जॉर्ब्स द वाटर। पेपर की बात करते हैं, पेपर एब्जॉर्ब्स द वाटर, है ना। So these are the phenomena in which absorption of water occurs. So here what happens in the absorption? One substance enters into the body of another substance. So suppose this is the container we have here and this is full of water. So this is full of water, no doubt. और इसके अंदर अगर हम लोग स्पंज डाल देते हैं, like say this is the sponge over here. Suppose this is sponge or it is of the porous nature. Sponge porous nature का ही होता है. So sponge put into the water. The sponge absorbs water. Sponge absorbs the water. So water is absorbed into the sponge. So इसके अंदर देखिएगा दो चीजें होते हैं। एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। Water enters into the body of this sponge. Water enters into the bulk of this substance, that is the sponge simply. So here one substance enters into the body of another substance. Water enters into the bulk of this sponge, and this phenomenon is called as absorption. Same example is of the tea and biscuits. So tea distribute into the bulk of the biscuit, into the body of the biscuit, and that phenomenon is called as absorption. So whenever one substance uniformly distribute into the body of another substance, that phenomenon is called as absorption scientifically. Whenever one substance uniformly distribute into the body of another substance, that phenomenon is called as absorption. Here in this case, water uniformly distributes into the bulk of the sponge or into the body of the sponge. Scientific word है bulk. So ये जो हम substance देखते हैं उसके body के अंदर enter करना, that is simply called as bulk. So distribution of one substance, uniform distribution of one substance to the body of another substance is called as absorption, जो हम daily routine life में discuss करते हैं. Absorption is bit different than this. What happens here in absorption? अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे घर के अंदर कई सारी चीजें होती है, मानो कई दिनों से हमें उससे हाथ नहीं लगाया, तो होता है कि मानो ये बोर्ड है, बोर्ड को भी अगर हम कई दिनों से यूज नहीं करेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा डस्ट आके कलेक्ट हो जाएगा। इसे अगर क्लीन करते तो सब हमारे उंगली को यहाँ पे डस्ट लग जाएगा। हमारे घर के अंदर दीवारें होती है, अब दीवार के ऊपर एक बार ऐसा हाथ लगा के देखिए, उंगली लगा देखिए, वहां पे आपको डस्ट दिखाई देगा। टेबल के सरफेस के ऊपर डस्ट कलेक्ट होता है, दीवार के सरफेस के ऊपर डस्ट कलेक्ट होता है। सो दिस हैपेंस। उसी का एक साइंटिफिक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का क्या होता है। सो सपोज दिस इज अ कंटेनर, दिस इज द कंटेनर और दिस कंटेनर इज फिल्ड विद द इंक। दिस इज नथिंग बट द इंक। ओके, ये जो है वो इंक है और इस इंक मतलब हम जो यूज करते हैं ब्लू कलर का इंक, ब्लैक कलर का इंक है। सो दिस इज द ब्लू कलर इंक। इसके अंदर सपोज वी हैव पुट दिस चारकोल पीस, ये चारकोल का पीस है, चारकोल कोयला। सो दिस इज द पीस ऑफ चारकोल, कोयले का पीस है, ये इसके अंदर हमने डाल दिया। सो दिस इज द कंटेनर हैविंग द इंक, सपोज इट इज अ ब्लू कलर्ड इंक और इसके अंदर हमने चारकोल का पीस डाल दिया। दिस इज द पीस ऑफ चारकोल, कोयला। थोड़ा सा शेक कर देंगे और कुछ समय के लिए रख देंगे। We'll shake it and we'll keep it for some time. What happens? It is been observed that whatever the ink present here in this one, this ink deposits on the surface of this charcoal. Charcoal के surface के ऊपर वो deposit होता है and this solution becomes faint colored या फिर almost colorless.
देखिए इनिशियली दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ ब्लू कलर्ड इंक. This is the blue colored ink. Ink itself is a solution. This is blue colored ink. When we put charcoal in this one, yeah, small pieces of the charcoal, and we shake it and keep it for a long time. Then after a long time, after some time, we found that this solution becomes less colored, yeah, faint colored or colorless, depend upon the charcoal and the concentration of the ink. That means the color is decreased. That means the pink pigment, yeah, ink particles get deposited or get accumulated over the surface or on the surface of this charcoal. Ink particles जो इसके अंदर uniformly distributed होते हैं पहले, वो इसके ऊपर यहाँ पे क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, accumulate होते हैं. So आप देखिएगा कि ये चारकोल का पूरा पीस है और चारकोल के सरफेस के ऊपर यहाँ पे इंक पार्टिकल डिपॉजिट्स होते हैं, accumulate होते हैं. And this phenomena is called as adsorption. This phenomena is called as adsorption. इसमें होता क्या है? One substance, that is water, distribute into the bulk of another substance. And here, one substance deposits or accumulates on the surface of another substance. This phenomena is called as adsorption. तो ये दीवार के ऊपर dust collect होना, टेबल के ऊपर dust collect होना, this is also one of the example of adsorption. This is the example of adsorption. So in that sense, we can say here, ink particles accumulated on the surface of this charcoal is the example of adsorption. So we have the definition of adsorption. Accumulation matlab deposition, also called as collection. So we can say that these are parallel words. More scientific word is accumulation. Accumulation of one substance on the surface of another substance is called as adsorption. You can say deposition of one substance on the surface of another substance is called as adsorption. Suppose जैसे कि अभी ये surface है और इसके ऊपर ये particles यहाँ पे आके adsorb हो जाते हैं. So this is one substance and this is another substance. और दोनों इसके surface के ऊपर आ जाते हैं. So इस तरीके का phenomenon होता है, that is here in the adsorption. Surface के ऊपर दूसरे substance के particle वहाँ पे क्या होते हैं, adsorb होते हैं, collect होते हैं, accumulate होते हैं. So we can say collection of one substance on the surface of another substance, या फिर accumulation of one substance, या फिर deposition of one substance on the surface of another substance is called as adsorption. So there is a big difference between adsorption and absorption. Here in this chapter, we are concerned with this adsorption, with this phenomena. This is not the part of our chapter, but we should get clear with this one. Absorption हमें नहीं discuss करना है, but we should be clear. कभी-कभी हो सकता है कि यार, what exactly the difference between adsorption and absorption? Is there a similar term or is there a different term? So that's why, being the name of chapter is adsorption and colloids, we should be clear about the concept. What is actually the adsorption? So adsorption is accumulation of one substance on the surface of another substance is called as adsorption. And this is the example. Now, this second is nothing but the colloids. Colloid is a kind of solution, is a type of solution. जिस तरीके से हम लोग शुगर पानी के अंदर पुट करते हैं तो शुगर सॉल्यूशन बनता है, सॉल्ट पानी के अंदर पुट करते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है. उस तरीके से हम स्टार्च पानी के अंदर पुट करेंगे तो वो एक सॉल्यूशन बनेगा. एंड दैट इज नथिंग बट द कोलाइड सॉल्यूशन. तो जी कोलाइडल और कोलाइड्स इज अ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जिसके अंदर भी दो सब्सटेंसेस होंगे. जैसे कि मैंने बताया कि शुगर एंड वाटर उसका एक सॉल्यूशन होता है, स्टार्च एंड वाटर उसका एक सॉल्यूशन होता है. तो उसी काइंड ऑफ सॉल्यूशन होता है, दैट इज कोलाइड्स. तो ये चैप्टर दो सेक्शन में डिवाइड होता है. पहला सेक्शन डिस्कस करेंगे एडसॉर्प्शन और दूसरा सेक्शन डिस्कस करेंगे हम लोग कोलाइड्स. एंड बोथ आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. मतलब विदाउट एडसॉर्प्शन कोलाइड इज बी पॉसिबल, कोलाइड के बिना एडसॉर्प्शन नहीं. लाइक दैट, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है. एंड दैट इज द रिलेशन एक्चुअली व्हाट वी हैव डिस्कस थ्रू द जर्नी ऑफ दिस चैप्टर, एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स. सो फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद एडसॉर्प्शन. Second section of the chapter is related with colloids and its applications and uses to the mankind. That is what we are going to discuss here in the chapter. It's a very theoretical chapter, very easy chapter. काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे डेली रूटीन लाइफ में आते हैं, हमने अभी तक के साइंस में देखे हुए, उन्हें वापस हमें रिवाइज करना है, रिकॉल करना है इस चैप्टर के अंदर. दैट इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स. तो होप सो everyone got the clarity about this adsorption. Okay, so now let's go ahead. Here again there are two substances selected. एक होता है ये सब्सटेंस है और एक होता है ये. So, ये जो इसकी जो बात की मैंने, दिस इज नथिंग बट चारकोल. ये है चारकोल और इसके ऊपर जो ये आते हैं, दिस इज नथिंग बट इंक पार्टिकल्स. इंक पार्टिकल्स. अब देखिएगा
ये जो छोटे छोटे पार्टिकल डिपॉजिट हो चुके हैं, these are nothing but the ink particles. और ये जो बड़ा पार्टिकल हमने यहाँ पे रखा है, this is nothing but the charcoal और piece of charcoal. तो इसके अंदर वापस दो सब्सटेंसेस हैं, एक है चारकोल और दूसरा है इंक पार्टिकल्स. ये दोनों मिलके जो फिनोमेना होता है, दिस इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन. नाउ दिस चारकोल इज कॉल्ड एज charcoal and we can have ink, adsorbent, and this is called as adsorbate. देखिए now there is a difference. One is adsorbate and one is adsorbent. शायद आपको स्पेलिंग ठीक से नहीं दिखाई देंगे तो आगे मैं लिखता हूं यहाँ पे adsorbate and adsorbent. So these are the two different substances. This is adsorbate and this is adsorbent. BAT. Charcoal is adsorbent and this ink particle are here adsorbate. What happens here? The substance which gets accumulated on the surface of another substance is called as adsorbate. The substance which gets accumulated, deposited, collected on the surface of another substance is called as adsorbate. And the substance on whose surface another substance or other substance is adsorbed is called as adsorbent. So there are two important definitions here in adsorption. The first definition is adsorption, second is adsorbate, and next is adsorbent. So ink particles are adsorbate and charcoal particles are adsorbent. So according to the definition, this is actually one of the examples. But it's a very general term. That is the substance on whose surface another substance gets adsorbed is called as adsorbent, and the substance which get deposited is called as adsorbate. इस example में ink particles are called as adsorbate and charcoal is called as adsorbent. जिस substance के surface के ऊपर दूसरा substance आ जाता है उसे adsorbent कहा जाता है, और जो deposit होता है उसे adsorbate कहा जाता है. समझ रहे हैं आप लोग? तो दो सब्सटेंसेस पे जो भी दूसरे सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब होता है उसे एडसॉर्बेंट कहा जाता है, और जिसके सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब होते हैं उसे कहा जाता है एडसॉर्बेंट. तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टेबल और डस्ट की बात करते हैं, मतलब टेबल के ऊपर डस्ट कलेक्ट हो चुका है और उसके बात करते हैं, तो टेबल इज एडसॉर्बेंट एंड डस्ट इज एडसॉर्बेट. दैट हैपेंस. सो दिस व्हाट वी कैन से. सो these are the definition between adsorption and adsorbent. Clear? The three definitions are very clear. What is adsorption, what is adsorbent, and what is adsorbate? Okay, so then now the thing is that why this phenomena arises? ये जो adsorption है, ये phenomena किस कारण से arise होता है, ये हमें डिस्कस करना है. That is very important. This is not exam oriented. This is not important for the exam, but for getting the better understanding of the concept, we need it. Why this adsorption occurs? Suppose this is the container. ये हमारा कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर suppose this is the water. ये उसके अंदर वाटर है भरा हुआ. ओके, दिस इज द वाटर. नाउ अब देखिएगा ये वाटर या फिर एनी ऑफ द सॉल्वेंट वी कैन से सुटेबल सॉल्वेंट. अभी इसके अंदर सारा वाटर के ही मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसके अंदर वाटर का जो बिहेवियर है हमें अलग अलग टाइप का बिहेवियर मिलता है. देखिए यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी एक वाटर का मॉलिक्यूल, देन यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल है, और सपोज यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल है. अब ये मैंने कुछ अलग अलग केसेस यहाँ पे कंसिडर किए. ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर टाइप के होते हैं. अब देखिएगा, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल व्हिच इज इन कांटेक्ट विद ये जो कंटेनर है हमारा. सपोज ये कंटेनर अगर ग्लास का है तो दिस इज इन कांटेक्ट विद ग्लास. यहाँ पे दिस इज इन कांटेक्ट विद एयर मीडियम एंड दिस इज इन कांटेक्ट विद लिक्विड मीडियम. तो यहाँ का मॉलिक्यूल तीनों मीडियम के कांटेक्ट में होता है, बिकॉज ये मॉलिक्यूल ग्लास के टच में है, एयर के टच में है, और इस तरफ वो लिक्विड के भी टच में है, मतलब उसी के वाटर के सेम मॉलिक्यूल के साथ भी टच में है. सेम इसी की भी बात आती है. दिस मॉलिक्यूल इज अगेन इन कांटेक्ट विद ग्लास, एयर एंड लिक्विड. इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल. इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं. ये मॉलिक्यूल सिर्फ दो मीडियम के टच में है, ऊपर यहाँ पे एयर मीडियम और यहाँ पे लिक्विड मीडियम. सो दिस इज यू कैन से एयर मीडियम और यहाँ पे लिक्विड मीडियम, सेम मॉलिक्यूल्स, मतलब उसके नीचे वाटर मॉलिक्यूल ये सारे. तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल के टच में है और ऊपर यहाँ पे एयर है, उसके ऊपर एयर है, तो एयर के टच में है. इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये ग्लास के टच में है और लिक्विड के टच में है. तो अगर ये दूसरा केस है तो ये तीसरा टाइप का केस हो जाता है. एंड ये जो है दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ केस, जिसके अंदर इसके सारे तरीके से, सारे बाजू से
सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा अलग, समझ रहे हैं आप लोग? तो चारों मॉलिक्यूल के अलग अलग केस समझ रहे हैं आप लोग? द मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर, मतलब यहां से लेकर सेकंड मॉलिक्यूल और यहां से लेकर सेकंड लास्ट मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मॉलिक्यूल इसके बाजू के सारे मॉलिक्यूल यहाँ तक और यहाँ तक के सारे मॉलिक्यूल इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स आर इन कांटेक्ट विद टू मीडियम। ऊपर की तरफ एयर मीडियम है और नीचे की तरफ यहाँ पे लिक्विड मीडियम है, और इसके कारण से इस मॉलिक्यूल का अलग बिहेवियर। यहाँ का मॉलिक्यूल और इधर का मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो तीन मीडियम के कांटेक्ट होते हैं, सॉलिड मीडियम, एयर मीडियम एंड लिक्विड मीडियम, तीन मीडियम के टच में होता है। ये मॉलिक्यूल दो मीडियम के टच में है, इधर सॉलिड और इस तरफ लिक्विड, और ये मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय ऑल द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो ये चारों मॉलिक्यूल का बिहेवियर डिफरेंट होगा, because they are surrounded by different environment or different particles, and that's why their behavior is totally different. Now, ये इनकी तो बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, but let's consider molecules on the surface. Let's consider molecule. surface के ऊपर भी दो टाइप के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एक ये टाइप का और एक ये या फिर ये टाइप का, मतलब दोनों एक ही आते हैं। So ये दो टाइप के मॉलिक्यूल आपको मिलते हैं। इसके कारण से होता क्या है कि this is the molecule which has the unequal forces acting on it. This is the molecule which has the different forces acting on it. कुछ फोर्सेस सॉलिड मीडियम के, कुछ फोर्सेस लिक्विड मीडियम के, गैस मीडियम के, कुछ फोर्सेस यहाँ पे लिक्विड मीडियम के। सो दैट्स व्हाई ये जो सरफेस के ऊपर जितने सारे मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आते हैं, किसी भी लिक्विड के, किसी भी लिक्विड के, किसी भी सॉलिड के सरफेस के ऊपर जितने सारे मॉलिक्यूल आते हैं, वो कुछ डिफरेंट टाइप्स के अनइक्वल फोर्सेस ऑब्जर्व करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ व्हिच देयर बिहेवियर इज टोटली डिफरेंट। Their behavior is totally different, and because of this unequal forces, there arises different concept as like a surface tension, as like a surface tension. ये type के phenomena यहाँ पे observe होते हैं, and because of which this unequal forces arise the concept called as adsorption. Adsorption नाम का phenomena इस कारण से होता है क्योंकि किसी भी substance के surface के ऊपर के molecule unequal forces observe करते हैं, unequal forces suffer करते हैं, और उसी के कारण उनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है। तो आप देखिए ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि टेबल के ऊपर डस्ट कलेक्ट होना, तो चलो कोई बात नहीं कि टेबल नीचे पार्टिकल वहां पे आके सेटल हो जाता है, तो पार्टिकल वहां पे बैठ जाता है, ग्रेविटी के कारण बैठ सकता है। बट अगर दीवार की बात करते हैं तो दीवार के ऊपर या फिर बोर्ड के ऊपर भी डस्ट आके बैठता है। ओके, तो ये इसके ऊपर डस्ट कैसे, यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से तो डस्ट नीचे गिरना चाहिए, फिर भी डस्ट पार्टिकल यहाँ पे अट्रैक्ट होके बैठते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, ये जो बोर्ड का सरफेस है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल भी इसी तरीके से कुछ अलग फोर्सेस, अनइक्वल फोर्सेस ऑब्जर्व करते हैं, और इसके कारण वो जो डस्ट पार्टिकल है, पार्टिकल के सरफेस के ऊपर भी कुछ अलग अलग फोर्सेस इंटरैक्ट होते हैं, और जिस फोर्सेस के कारण देयर अराइज सम अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल एंड मतलब एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। इसके ऊपर का जो डस्ट पार्टिकल है, वो डस्ट पार्टिकल के ऊपर भी कुछ अनइक्वल फोर्सेस है। ये जो बोर्ड है उसके सरफेस के ऊपर भी पार्टिकल के ऊपर कुछ अनइक्वल फोर्सेस है, and because of these unequal forces there arise attractive forces between adsorbate and adsorbent, and hence the phenomena is called as adsorption. The adsorption phenomena is arises due to the different types of unequal forces acting on the particles which are present on the surface of the liquid or whatever the solid or whatever the particles, fine particles what we took it. So they absorb different types of unequal forces, and because of this arises the adsorption phenomena. तो ये जो सरफेस के ऊपर के पार्टिकल है, उनके कारण ही एडसॉर्प्शन फिनोमेना अराइज होता है, और एडसॉर्प्शन जैसे अराइज होता है, कई सारे फिनोमेना उसके कारण आ जाते हैं, कई सारे उसी के साथ इंटर रिलेटेड टॉपिक आ जाते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन द चैप्टर दैट्स कॉल्ड एडसॉर्प्शन। क्लियर विद दिस? तो इनिशियली वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ एडसॉर्प्शन, डेफिनेशन ऑफ एडसॉर्बेट, डेफिनेशन ऑफ एडसॉर्बेंट, एंड वी हैव सीन व्हाई दिस एडसॉर्प्शन फिनोमेना अराइजेस। ओके, सो दैट इज व्हाट वी कैन से एडसॉर्प्शन फिनोमेना, हाउ और व्हाई इट अराइजेस। नाउ at one side we have discussed the adsorption. So there are three related concepts. So one is, you can say, adsorption. Okay, and another side there is, you can say, desorption, and there is a third phenomenon called as sorption. Sorption. अब देखिए, इधर का add, इधर का d, ये वर्ड हटा देंगे तो sorption बनता है, SORPTION, sorption. So adsorption, desorption and sorption. You already got this. What is adsorption? What is adsorption? So जैसे कि हमने देखा कि suppose this is the table surface. Okay, this is the surface, table surface, जिसके ऊपर ये particles यहाँ पे adsorb होते हैं. So ये जो particle है, this is called as adsorbate.
ये जो सरफेस है दिस इज कॉल्ड एज एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट, और ये इनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव प्रेजेंट है जो भी यहाँ पे होता है, समझ रहे हैं आप लोग। सो whenever one substance accumulates on the surface of another substance, this phenomenon is called as adsorption phenomenon. Okay, तो जैसे कि एक टेबल के सरफेस के ऊपर ये पार्टिकल्स यहाँ पे एडसॉर्ब हो चुके हैं। नाउ यहाँ पे जब डिसॉर्प्शन में आते हैं हम लोग, अगर हम ये डस्ट पार्टिकल रिमूव करते हैं, अभी हमारे घर के अंदर भी हम जानते हैं कि सरफेसेस हम लोग क्लीन करते रहते हैं, टेबल सरफेसेस क्लीन करते रहते हैं। मैंने भी आपको स्कैन पहले इस बोर्ड को क्लीन कर लिया तो बोर्ड के ऊपर का डस्ट निकल गया उसके कारण। तो होता क्या है कि इसके अंदर जो एडसॉर्बेड पार्टिकल हुए थे उनको हमने हटा दिया। सो रिमूवल ऑफ adsorbate from the surface of adsorbent is called as a desorption process. It's called a desorption process. Addition of adsorbate on the surface of adsorbent is called as adsorption, and the removal is called as a desorption. Removal is called as a desorption. And whenever adsorption and desorption occur simultaneously, then that process is called as sorption. देखिए, whenever adsorption and desorption occur simultaneously, that's called as sorption. So what is sorption? समझ में आपको? Sorption का मतलब यह है कि this is the process in which adsorption and desorption occur simultaneously. Here adsorption also occurs and desorption also occurs. दोनों process simultaneously. Both process occur simultaneously. So this process occurs simultaneously, and that's why this process is called as sorption process. अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है many reactions going on in human body, that is enzyme reactions का बात करते हैं। शायद आप में से जिन बच्चों का बायोलॉजी है वो जानते होंगे व्हाट आर द एंजाइम्स। एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर काफी सारे एंजाइम्स होते हैं और आपने कैटालिसिस भी देखा है, कैटलिस्ट भी देखा है। कैटलिस्ट के बारे में आप जानते हो, इसी चैप्टर में हम कैटलिस्ट नाम का एक अलग टॉपिक देखेंगे व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एडसॉर्प्शन एक्चुअली। चलो कैटलिस्ट का एग्जांपल देता हूं। एग्जाम का भी आपको मतलब एंजाइम का भी एग्जांपल है और कैटलिस्ट का भी एग्जांपल है। तो कैटलिस्ट के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हो। व्हाट इज कैटलिस्ट एक्चुअली? सो वी नो वेरी वेल कैटलिस्ट जानते हो। कैटलिस्ट is the substance which do not take part in the chemical reaction but increases the rate of reaction. So this is the substance which increases the rate of reaction. It actually do not take part in the chemical reaction. It is not true actually. It takes part in the chemical reaction, but again it may be regenerated. Sometimes it do not take part, sometimes it take parts in the chemical reaction, but it is regenerated. It is not utilized during the course of chemical reaction, and hence we can define like that. So, but इतना तो हम कह सकते हैं this is the substance which increases the rate of reaction. Catalyst is the substance which increases the rate of reaction. तो कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। N2 plus thrice H2 produces twice NH3. See, this is the reaction. N2 plus thrice H2 produces twice NH3. This is the reaction, and this reaction occurs in the form of here in presence of iron or molybdenum, you can say that. So iron is acting as a catalyst, or you can say in many of organic reactions, you can say nickel, copper. These are the metals which are acting as a catalyst over here. So इस रिएक्शन के अंदर मानो हमने आयन एज अ कैटलिस्ट दिया, तो होता क्या है? सपोज this is the piece of iron which is acting as a catalyst. This is the piece of iron which is acting as a catalyst. This piece of iron adsorbs N2. This adsorbs H2. देखिए, this is the piece of iron. This is a piece of iron जिसके ऊपर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एडसॉर्ब होता है, जिसके ऊपर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एडसॉर्ब होते हैं, और इस सरफेस के ऊपर मेनी मॉलिक्यूल एडसॉर्ब होते हैं। So when this molecule adsorbs on the surface of this, their concentration increases. They comes in contact. So nitrogen comes in contact with hydrogen. They react to produce ammonia. See, this is hydrogen, this is nitrogen, और ये react होकर यहाँ पे अमोनिया तैयार होता है। So nitrogen adsorb हुआ था, hydrogen adsorb हुआ, concentration बढ़ा, reaction हुआ, अमोनिया तैयार होता है। जैसे अमोनिया तैयार होता है, पार्टिकल निकल जाता है। जैसे अमोनिया तैयार होता है, पार्टिकल निकल जाता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन एडसॉर्ब होते हैं, अमोनिया डिसॉर्ब होता है। समझ रहे हैं आप लोग? इस रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एडसॉर्ब होते हैं और जैसे अमोनिया तैयार होगा दैट डिसॉर्ब्स। सो इसका मतलब है कि हम जब ये रिएक्शन कैरी ऑन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयन कैटलिस्ट, एट दैट टाइम कंटिन्यूअसली और रेगुलरली एडसॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन प्रोसेस गोइंग ऑन। हु इज एडसॉर्ब्स? नाइट्रोजन हाइड्रोजन एडसॉर्ब्स ऑन द सरफेस ऑफ आयन, concentration increases, reaction occurs, reaction happens,
and then ammonia produced will be dissolved. Ammonia इसके ऊपर hold down नहीं होता. Ammonia will be removed from the surface of that. That is the desorption process. So on the surface of this iron, adsorption and desorptions are going on simultaneously. That is nothing but the sorption. That is nothing but sorption. Similar reaction occurs in the human body, especially for the enzymes. अब देखिए, catalyst is the substance which increases the rate of reaction. Enzymes are a very important biological catalyst. हमारे बॉडी के अंदर कई different types के enzymes होते हैं, and these enzymes increase the rate of chemical reactions by millions times. By millions times. देखिए millions times है, मतलब हम लोग one time, two time बोलते हैं, है ना? दुगना हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ये हम लोग कहते हैं. यहाँ पे rate of reaction increases by millions times. इतने खतरनाक कैटलिस्ट होते हैं enzymes जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं. These enzymes plays a very important role in many of the processes. Even our digestion, even our thinking process, even our you can say breathing process. अब देखिए ना, सिंपल सी बात कीजिए कि हम लोग हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. कितना स्पीड होता है, कितना स्पीड में हम कितने सेकंड में कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार हम लोग सांस छोड़ देते हैं. इतने कम समय में वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब किया जाता है और हमारे बॉडी के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है, एंड वो ऑक्सीजन कैरी टू द कंसर्न सेल्स. एंड दिस हियर एंजाइम्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो दैट्स व्हाई catalysis is one of the important process in which this adsorption, desorption occurs simultaneously. In that process is nothing but called as sorption. That process is nothing but the sorption. Is clear with this? So that is what we can see here. So पहले हमने तीन definition देखे थे: adsorption, adsorbate and adsorbent. अभी हमने देखे what is adsorption, what is desorption, and what is sorption. So these definitions are clear. So what is sorption and all? Clear with this? So that is what we can see. Now let's move ahead. What are the types of this adsorption? Adsorptions are of two types. These adsorptions are of two types. Okay. Now one is, we can say, physical adsorption. Okay. चलो हम ऐसा करते हैं. Yes. Physical adsorption. And दूसरा लेते हैं हम लोग, that is the chemical adsorption. Chemical adsorption. So this is the difference. Adsorption के दो टाइप होते हैं. एक ही physical adsorption, दूसरा है chemical adsorption. Physical adsorption क्या होता है कि here actually physical forces are involved. Physical forces are involved, and here actually chemical bond formation is there. Chemical bond forms. Chemical bond forms, or chemical bond is involved in this process. So the adsorption in which physical forces are involved is called as a physical adsorption, or the adsorption in which a chemical bond formation is involved is called as a chemical adsorption. फिजिकल फोर्सेस की बात करते हैं हम लोग, तो वैन डर वाल्स फोर्स की बात करते हैं. वैन डर वाल्स फोर्स इज अ फोर्स व्हिच इज इक्वल टू नो, एंड दैट इज अ वेरी वीक फोर्स व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन adsorbate and adsorbent. मतलब सी दिस इज द सरफेस, और इस सरफेस के ऊपर ये पार्टिकल्स आते हैं. ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक टाइप का होता है, फिजिकल. That is, you can say van der Waals like force. Van der Waals force ऐसा होता है कि किसी भी दो physical particle के बीच में present होता है, and that weak force is present, that is physical. So that's why whenever a physical force is present between adsorbate and adsorbent, then that is called physical adsorption. Or whenever a chemical bond formation actually involved between the adsorbate and adsorbent, that's called chemical adsorption. अभी इसका एक दूसरा ये होता है कि chemical adsorption is a permanent. Chemical adsorption is permanent. तो ये permanent होता है. और ये इसकी बात करेंगे तो ये टेम्पररी होता है. ये टेम्पररी होता है. So टेम्पररी होता है. अभी इसका एक दूसरा मतलब होता है, okay, which force is present. Okay, that is what I stated here कि physical force में से van der Waals force नाम का एक force है. van der Waals force, ये फोर्स का ही नाम है. फिजिकल फिजिक्स में आप देखेंगे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में देखा होगा, van der Waals force नाम का एक फोर्स है जो फिजिकल फोर्स में आ जाता है. सो फिजिकल फोर्स एक van der Waals नाम का फोर्स है जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एडसॉर्बेट एडसॉर्बेंट के बीच में, बहुत ही वीक होता है, इक्वल टू नो. उस टाइप का अगर फोर्स होगा तो उसे हम लोग फिजिकल फोर्स कहते हैं, और वो फिजिकल एडसॉर्प्शन बनता है. और
एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में एक्चुअली जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, then that is you can say chemical bond formation. That is called as chemical bond formation. So when adsorbate and adsorbent के बीच में chemical bond formation होता है, then that is you can say chemical adsorption. इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, that is you can say iron oxide. Iron oxide. अभी iron oxide में होता क्या है? This is called as rust. Iron oxide is rust. हम जानते हैं हमारे घर के अंदर हमारे डेली रूटीन में देखते हैं हम लोग कि आयरन का मेटल पीस होगा तो वो रस्ट होता है, रस्टिंग ऑफ द आयरन, मतलब जंग लग जाना किसी भी मेटल के पीस को देखते हैं, खास करके आयरन के मेटल के पीस को, तो जल्दी जंग लग जाता है। और वो जो जंग है दैट इज नथिंग बट यू कैन से आयरन ऑक्साइड उसे कहते हैं। तो ऑक्सीजन इज द एडसॉर्बेंट एंड आयरन इज द एडसॉर्बेंट। तो आयरन के सरफेस के ऊपर जो ऑक्सीजन एडसॉर्ब होता है वो ऑक्सीजन एक्चुअली बॉन्ड फॉर्म करता है आयरन के साथ। तो आयरन ऑक्साइड इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ यू कैन से केमिकल एडसॉर्प्शन, जिसके अंदर आयरन इज एक्टिंग एज एडसॉर्बेंट एंड ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज एडसॉर्बेंट। सो ऑक्सीजन एडसॉर्ब्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन एंड द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हैपेंस बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन एंड दैट परमानेंटली फॉर्म द रस्ट। तो अगर हमें वो सरफेस क्लीन करना है तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं हटा सकते, हमें पूरा आयरन ऑक्साइड का पूरा लेयर हटाना पड़ेगा, because that rust पूरा हटाना पड़ेगा, that's why it is called as permanent, it can't be removed। मेरा इसकी बात करते हैं फिजिकल फोर्स की, तो टेबल के ऊपर जो डस्ट कलेक्ट होता है या फिर दीवार के ऊपर जो डस्ट आ जाता है, डिपॉजिट होता है, वो हमारा फिजिकल एडसॉर्प्शन का फोर्स है। डस्ट हम हटा देंगे, वापस नया आएगा, वापस हम लोग हटा देंगे। सो दैट इज यू कैन से, तो फिजिकल एडसॉर्प्शन हम लोग रिमूव कर सकते हैं, केमिकल एडसॉर्प्शन हम रिमूव नहीं कर सकते, दैट इट इज कॉल्ड एज परमानेंट, whereas this is temporary because it can be removed। so इसका मतलब ये है कि chemical adsorption is a very specific, chemical adsorption is very specific। see, iron reacts with oxygen, so iron is a specific substance, oxygen is a specific substance, so that's why the iron oxide is formed by iron with oxygen। ऐसा नहीं कि आयन कार्बन के साथ रिएक्ट होता है, अभी हवा में कार्बन भी है, आयन कार्बन के साथ रिएक्ट होके कुछ सब्सटेंस तैयार नहीं करता, आयन प्रेफरेबली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके आयन ऑक्साइड तैयार करता है। तो इन दैट सेंस वी कैन से केमिकल एडसॉर्प्शन इज वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस का किसी के साथ भी नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन बहुत स्पेसिफिक होते हैं और स्पेसिफिक प्रोडक्ट तैयार होते हैं, मतलब किसी भी सब्सटेंस का किसके भी साथ रिएक्शन नहीं होता है, पर्टिकुलर सब्सटेंस का पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ रिएक्शन होता है, वो परमानेंट होता है, दैट इज से केमिकल एडसॉर्प्शन इज अ स्पेसिफिक, सो इट इज वेरी स्पेसिफिक। यहाँ पे ऐसा नहीं है फिजिकल एडसॉर्प्शन, टेबल के ऊपर डस्ट आ सकता है, टेबल के ऊपर पानी भी आ सकता है, टेबल के ऊपर ऑक्सीजन भी आ सकता है, टेबल के ऊपर कार्बन भी आ सकता है, स्मोक पार्टिकल भी आ सकते हैं। दैट मींस फिजिकल एडसॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली बॉन्ड फॉर्मेशन है ही नहीं ना, फिजिकल फोर्स है, और फिजिकल फोर्स किसी भी दो पार्टिकल के बीच में हो सकता है। सी, दिस इज द प्लास्टिक, इस प्लास्टिक को किसी मेटल के साथ लाएंगे तो मेटल और उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बहुत वीक होता है लेकिन होता है, and that's why it is non-specific। फिजिकल एडसॉर्प्शन किसी भी दो पार्टिकल के बीच में हो सकता है, केमिकल एडसॉर्प्शन किसी भी पार्टिकल के बीच में नहीं हो सकता। दिस इज मल्टी-लेयर मतलब कैसा लिखना है कि सपोज दिस इज द सरफेस, इसके ऊपर ये पहला लेयर आया डस्ट का, उसके ऊपर दूसरा लेयर आएगा, उसके ऊपर तीसरा लेयर आएगा, ऐसे डस्ट के कितने भी लेयर आ सकते हैं। मान लो बीच में आपने कुछ कार्बन का लेयर डाल दिया तो वो भी उसके अंदर आ जाएगा। So it is multi-layered, एक के ऊपर लेयर हो सकते हैं। अगर हम माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल हैव एडसॉर्प्शन विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ दिस एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्ब, फिर उसके बाद और मॉलिक्यूल ऐसे माइक्रो लेवल पे कई मॉलिक्यूल आ सकते हैं, दैट्स व्हाई इट कैन बी मल्टी-लेयर। हियर इट इज यूनिलेयर। एक बार आयन का ऑक्सीजन के साथ फॉर्म हुआ तो वापस ऑक्सीजन उसके ऊपर नहीं आ सकता, मतलब ये देखिए दिस इज द ऑक्सीजन और दिस इज द आयन, इसके ऊपर ये ऑक्सीजन आ गया तो वापस उसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं आ सकता, सिंपली नॉट, ऑक्सीजन नहीं आ सकता, because it is not a multi-layer, it is a specific, and that's why it is unilayer। So that's what we can say here। So this is the difference between physical adsorption and chemical adsorption। So physical adsorption actually involves the physical process, and chemical adsorption involves the chemical process, that's what we can say। So we can know what we have discussed today. Number one, we have discussed that is what is adsorption, what is adsorbent, and what is adsorbate। Next we have seen what is adsorption, what is desorption, and what is sorption, and then we have seen two types of adsorption, that is you can say physical adsorption and chemical adsorption।
what is physical adsorption, what is chemical adsorption, and there are points of differentiation between them. Clear with this? Also, we have seen the concept of why this adsorption arises, what are the different types of unequal forces acts on the surface, and also we have seen difference between adsorption and absorption. So that is the topic what we have covered today. Tomorrow we'll discuss the next topic. Thank you very much. Bye-bye.